Marketing message. What is this? Marketing message. This is what you say in your ads video, even in everywhere, wherever you go, you talk about that. Whatever the videos you're recording, you talk about that. YouTube video, reels, ads, everywhere you talk about this. What exactly marketing message is? Very big concept. Let's talk about it. अब ओल्ड मार्केटिंग मैसेजेस कैसे होते थे, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. लोग क्या करते थे, सर्च करते थे. लेट्स से यू अंडरस्टैंड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यू विल गो एंड सर्च डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन इलाहाबाद, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन मुंबई. लुक एट सम वेबसाइट, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग नियर यू, रिलेटेड ये वो ब्ला, इस तरीके से आता था. So old way क्या था, people was introducing like that. Hi, I'm a digital marketer. Hi, I'm a business consultant. Hi, I'm a marriage counselor. Hi, I'm a stress coach. Hi, I'm a life coach. ऐसे introduce करते थे. But unfortunately ये approach सही नहीं है, because ये क्या होता है कि अब लोग market में आपको compare करते हैं. Example, you said I'm a life coach. Fine. There are 100 other life coaches. Let me differentiate. You are better, or Shivangi is better, or somebody else is better. They're gonna compare. But how will you kill that comparison? How will you kill that comparison? Because comparison से आता है discount वाला term. Comparisons you lose sales. So don't allow them to compare. And how will you make yourself different so that they don't compare? Sound. How will you sound? Sound personalized to them. ऐसा लगे कि यार ये तो भगवान है, ये तो मेरे लिए ही बैठे हुए हैं आप. If you make them feel, oh, wow, exactly, that's what I want. अगर ये चीज आप feel कराते हैं, they'll not compare. They just come to you. And this is how you differentiate from everybody else in your market. And how will you do so? Let me just explain that. So there are 3 different methods to do that. And new marketing message का थोड़ा example दूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं. So new marketing message में हम क्या करते हैं, specify करते हैं हम किन्हें target कर रहे हैं, right? For example, if we are targeting employees, if we are targeting job people, whether they are in government job or corporate job, whatever they are doing, if they are doing any job, right? So we're gonna target that. मतलब हमारे जो भी marketing message होगा वो directly उनसे बात कर रहा होगा. एंड हम उन्हें ये बताएंगे कि हम क्या प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, राइट, व्हाट सोल्यूशन वी आर यूजिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो इन सिंपल वर्ड, पहले लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, हाय आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, हाय आई एम अ डिजिटल मार्केटर, हाय, ऐसे, राइट, हाय आई एम अ डेंटिस्ट. बट अब आप कैसे करोगे, हाय आई हेल्प कोचेस एंड कंसल्टेंट टू solve their coaching business, to generate high quality leads for their business with my CPMB in something like that. With my MDGT ads, with my ad services, right? Ad जो digital marketing agencies है ना, हम agencies से example ले रहे हैं. So specific हो गया. For example, in my case, hi, अब मैं इसको ऐसे introduce करूँ. Hi, my name is Ganesh and I help coaches and consultant. कैसे? I help coaches and consultant to reach 1 lakh rupees per month income in next 90 days using my hybrid sales strategy. Got it? New way of introduction, right? So अब यहाँ पे क्या हुआ? We have represented a unique model that excites them. We just pronunciate. हमने बोला, we spoke the market, we directly talked. हमने बोला है ये चीज, coaches and consultant, that holds them in the video. Then we tell them the problem we are solving, so they resonate with it. Yes, exactly, that's the problem. And then we talk about the method that we are using to solve that problem. So that's what excites them. तो ये चीज होता है complete. Do you think that if we are saying, एक बंदा ये है जो बोल रहा है digital marketing, hi, I am digital marketing agency and I help you generate customers. एक ये बंदा है. दूसरा मैं हूँ, hi, my name is Ganesh and I help coaches and consultant to generate high quality leads for their coaching workshops using my Facebook ads services. अगर आप एक कोच हैं, आप ये चूज करेंगे. सेकंड तो ये हो गया. सबसे पहले उसका नाम बोल के उसे पुकारना, कॉल करना, कोचेस एंड कंसल्टेंट, बिजनेस पीपल, बिजनेस ओनर, ऐसे. फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम को बताना, फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन बोलना. अगर आप एक चीज देखेंगे, मैंने इस बार बिजनेस की जगह वर्कशॉप बोली. हाँ. ज्यादातर लोग लीड किस लिए लाते हैं, कोचेस कंसल्टेंट, वर्कशॉप के लिए, राइट? व्हाई नॉट टू कॉल इट डायरेक्टली वर्कशॉप और 1-to-1?
Do you want more qualified leads in your webinar? Do you want more qualified leads for your one-to-one sales call? Yes. Hi, my name is Ganesh and I help coaches and consultants to generate high quality leads for their workshops, for their one-to-one calls using my Facebook ad services. If you're interested to know more about that, click the link below and book your call with me. So this is a unique way of representation. ये एक method था. The first thing that should enter in your niche mind after reading this message, after listening you, exactly, Rudra gets me. Yes, Rudra is right. Rudra understands me. So sales happens not when you understand them, right? When you understand them, sale doesn't happen when you make them feel that. Sales happens when they feel understood. जब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये बंदा मुझे समझता है, इसकी जर्नी मेरी जर्नी सेम है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एग्जैक्टली मेरी यही प्रॉब्लम है, तो फिक्स्ड है, ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि रिलेटेबिलिटी, हाँ रिलेट करना, राइट।